और ये गाड़ी में जो बंदा था he jumped actually. टेस्ला के सामने एक्सीडेंट हुआ था बट इतना ट्रैफिक और there's a concert today, that's why. तो आज है Juneteenth फेस्टिवल, बिकॉज ऑफ दैट हमारे अपार्टमेंट के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड there's a concert going on in the park near us as well. And आज हम जा रहे हैं for special class that's going to be Indian culinary class. North Indian culinary class. Yes. So खाना मिलेगा basically in short, and we will get to learn how to cook and eat some free food. I mean, it wasn't free. We had to pay for the class, but yeah. Yeah, it wasn't that bad. I think. How much was it? The class? $55 a person. And आज एक गड़बड़ हो गई. We forgot to charge our Tesla. तो आज हम माजदा में जाएंगे इन केडीज माजदा. I'm gonna put this car on charge क्योंकि आज मैं एक इंटरेस्टिंग पार्टी में जा रहा हूँ शाम को, तो वहाँ पे टेस्ला लेके जाऊँगा. तो अभी लेट्स चार्ज इट. आज है 18 जून. 21 जून को नंबर प्लेट एक्सपायर हो रही है टेम्प्रेरी एंड अब तक आई नहीं है. They haven't even delivered it yet. तो इस कार में रिपेयर के लिए नहीं दे रहा हूँ कार को जब तक नंबर प्लेट नहीं आती. एक चार्जर ख़राब हो चुका है. दिस वर्क्स एंड दैट डजंट वर्क. मेंटेनेंस रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी. ओके 8 घंटे में चार्ज हो जाएगा. So, do you know the story of Juneteenth? Yeah, so I just learned about the story of Juneteenth. Earlier, it wasn't a federal holiday. अभी पूरे US में इस दिन छुट्टी होती है and it's observed on one day. तो observed एक टर्म होती है US में, आपको पता होनी चाहिए. One thing is holiday, one thing is observed. Let's say अगर holiday हो जाती है वीकेंड में, Saturday और Sunday, then they observe it on a working day. इंडिया में ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे छुट्टी हो तो दे देते हैं. जो भी आसपास मंडे या फ्राइडे पड़ता है दे देते हैं. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट Juneteenth holiday, it was earlier only celebrated in Texas or western part of United States. क्योंकि जब 19 when was the year slavery ended? I think 1863. Make some noise for your ancestors. 1863. Yeah, so during 1863 when slavery ended, not everyone in the US knew about it. कुछ लोगों को पता था, especially in east part of United States, including New York, Georgia, all the eastern states, but western states did not know about it, and Texas and western states were the last to know about कि हाँ भाई slavery खत्म हो गई है, let's do party. So they did a party and that party was known as Juneteenth and they made it a state holiday in Texas state only. अब इन्होंने फेडरल हॉलीडे बना दी है, सो एवरीवन कैन सेलिब्रेट दिस डे. बट डिफरेंस इज हर कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती. आई एम नॉट गिवन ऑफ ऑन दिस डे. दे टेल अस कि टेक वन ऑफ द फ्लोटिंग डे. तो हर कंपनी छुट्टी नहीं देती Juneteenth को. कुछ कंपनीज गिव यू ऑफ. डू यू गेट ऑफ ऑन Juneteenth? Yeah. You do. Okay. I don't. Also, do you know why it's Juneteenth? Juneteenth? I don't know why it is. Because it's always on June 19th. June 19th. Oh. Yeah. I see. So it's in the 10th days. I see. It's on Juneteenth. Yeah. Awesome. Last day of 10th. Do you think it will be mostly Indians or Americans? It'll be funny if you see more Indians. Right? I highly doubt there will be that many Indians. Yeah, I doubt as well. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ in Bebe's kitchen. Bebe means mother in Punjabi. मुझे सारे पता है. I know most of them to get and you'll get discount next time. But an engineer can use image recognition for all. Do you know them all? Can you tell? All this stuff right here, which is like staple for what I do. And I cook North Indian, South Indian, East Indian. I cook because I travel across. These are the staples which would go in most of the North Indian dishes. So we don't want it too much. सबसे पहले पकौड़े. Honestly speaking, these were one of the most crispy पकौड़े I ever had. You forgot the mint. Yes. Yeah, these are beautiful. You did a good job. Fall apart a little bit there. So दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडियन खाना इज एक्चुअली वेरी हेल्दी. अमेरिकन्स तो ये सोचते हैं कि यार चिकन टिक्का मसाला और बटर चिकन बहुत अनहेल्दी कभी कभी कंसिडर कर देते हैं इंडियन फूड को. जो घर हम इंडियन फूड बनाते हैं, जो हमने आज बेबेस किचन में बनाया, दैट इज सो गुड. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे लिए रोज बनाना मुमकिन नहीं होता. सो इस कारण माई प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, ताकि मेरी डेली प्रोटीन इनटेक्स
सही रहे एंड इट इज़ फास्ट एज वेल। मुझे हर रोज़ ब्रेकफास्ट बनाने में या फिर कभी कभी पोस्ट वर्कआउट मील बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। हमेशा मैं फ्रेश फ्रूट्स या फिर फ्रोज़न फ्रूट्स डाल दिया करता हूँ विद मिल्क एंड प्रोटीन पाउडर। अगर आप कार्ब्स एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ओट्स भी डाल सकते हो एंड इनके पास इनका पीनट बटर भी है फ्रॉम माई प्रोटीन, आप वो भी डाल सकते हो। सो यू कैन मेक मल्टीपल काइंड्स ऑफ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। इनकी अलग ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी है जैसे पैनकेक मिक्स और कई ज़्यादा ऑप्शंस आपको इंडिया में मिल जाती हैं। सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट एंड इस बार इनके एंड ऑफ मंथ सेल पे आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 35% ऑफ डिस्काउंट विदाउट एनी मिनिमम कॉस्ट। तो आप जितना भी ऑर्डर करना चाहो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड SINGINUSA फॉर एक्स्ट्रा 35% ऑफ डिस्काउंट एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। How's it? Yeah, in India you just had fish pakoda. It's nice to experience the Adam too. Yeah. Number 2 कोरिएंडर चिकन, जो मैंने लाइफ में पहली बार यहाँ पे खाया। I may have suggested no cumin or no coriander, but that's like a standard recipe. Now, in this audience where everybody has tried Indian, add it little by little, just to see, because I don't want to add too much. If you add too much, it kind of too minty. So mint yogurt is called raita or Raita, no? yeah, Raita. This is how you're gonna knead. Yeah, like this. Make sure the pot So is punch it like dry. you want to punch me all the time. Khatam. I don't think none of Yeah, you have to start over now. that's okay. Very nice, Harnu. Oh, That's thank you. perfect. Thank you. I love it. Awesome. मत Mom. करो, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। Perfectly round. No, it should be perfectly round. This is Not good. no. Wait. Now it's getting dry. Now you take it out. Put that dry flour. Oh no, too late. We Yeah, need take it to out. start cooking it as well. They are, all of them are super fast. Too oh late. my gosh. You have You to keep guys are the singing. best. Like, एंड अमेरिकन्स वर शॉक्ड टू सी, वो कहते हैं कि यार अगर ब्रेड आपको मार्केट में मिलती है तो रोटी यानी कि ब्रेड घर में क्यों बनाना। Fat in the oil Well, I'm a carboholic. rather than feeling like I'm in a canned experience. and another chicken recipe and flatbread. So first of all, thank you so much, baby, for your class. And what are your favorite Indian food? My favorite Indian food is kadai, Kadai. kadai paneer. Kadai paneer. Wow. And yours? Same, I would say. Kadai paneer. Awesome. And what about, baby, what's your My yeah. my favorite food is chole bhature, and I love my dosas, masala dosas. Wow. Thank you so much for your class. I love the mint yogurt. It was my favorite, and the coriander chicken. I was so bored with butter chicken from North India, from Punjab, but it was so special. Thank you so much. Of course, thank you so much. It was a pleasure to have you all here. Yeah, thank you. Yeah. Yeah. Wow, garam masala. Awesome. So this is all. Thank you. खाना खाने के बाद मैं सीधा आ गया डिनर करने के लिए दोस्तों के साथ. So putting it to valet mode. 1 2. और रेस्टोरेंट से निकलते ही इतना बड़ा क्रैश. वो तो भगवान का शुक्र है मैंने खुद अपनी गाड़ी वैले में नहीं दी. मैं चाबी भूल गया था, फ़ोन से अनलॉक होती है. उन्होंने कहा आप खुद ही पार्क कर दो. तो शायद मेरी भी हो सकती थी. ये वैले वाले क्या करते हैं मुझे नहीं पता किसने किसकी ली. भाई तीनों गाड़ी ठुक गई हैं. ये गाड़ी भी ठुक चुकी है, ये भी. तो आई थिंक कि हुआ क्या होगा. तो पीछे वाला बम्पर देखो, बम्पर यहाँ से गिर के आगे आ गया है. यहाँ पे है ना, ये कार इधर से आ रही थी और फिर इधर से है ना जो कार आई थी इसने बीच में लेना आया. क्या हुआ? नहीं ऐसे में कहानी बना रहा है, कहानी हिपोथेसिस. यहाँ पे हिपोथेसिस बन रही है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आएगी. इट्स अ मैथ प्रॉब्लम, डिस्क्रीट मैथ.
उसने बोला कि वो जेल गया है। जेल गया, कमाल ही होगी। सो कहानी में पता चल गई ये बंदा यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ रहा था, ही वॉज मे बी ड्रंक और समथिंग, तो टर्न नहीं करना चाहिए था, ही एक्चुअली गैस्ड इट, तो ब्रेक मारने की जगह सीधा यहाँ पे चला गया अचानक से, ही एक्चुअली फ्लोटेड द कार, हाई स्पीड यहाँ पे टर्न लिया, तभी बम्पर उसका यहाँ से इधर, और ये गाड़ी में जो बंदा था ही जम्प्ड एक्चुअली, मतलब थर्ड कार तक कोलिजन गई, वो उसने जंप मारी, तो पता नहीं ये बीच वाली कार का क्या हाल हुआ होगा। राइट, इट्स सो स्केरी यार। और वो पुलिस बात करी, इन्होंने बोला कि जिसने ठोकी थी उसे जेल में ले गए अभी अभी, तो ये इंश्योरेंस पे करेगी। सो इस बंदे की इंश्योरेंस पे करेगी इन दोनों गाड़ियों की कोलिजन की चार्जेस और कोलिजन का खर्चा। तू एक काम कर, तू वहाँ पे क्रोगर चल, ठीक है, हम वहाँ पे क्रोगर मिलते हैं, ठीक है। तो क्रोगर में आए हुए। सो अच्छा हुआ मैंने आज गाड़ी वैले में नहीं दी, मैं आपके सामने देने वाला था, बट देन रियलाइज किया कि मेरे पास गाड़ी की चाबी नहीं है, द कार्ड दे गिव मी, बस यार फोन इज द की, तो इस कारण उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर ही पार्क कर दो, वैले आपको नहीं देंगे और वैले के आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। रेस्टोरेंट में पुलिस ही भरी पड़ेगी, बट स्टिल थैंक गॉड जिनकी ठुकी उन्हें कुछ नहीं हुआ यार। जो थर्ड कार थी वो वाला बंदा जंप किया, बाकी गाड़ियों को क्या हुआ होगा, बच गए होपफुली। हाँ होपफुली सबकी जान बच गई, बच ही गए होंगे। हाँ होपफुली बच ही गए। और सबने वैले में सीट बेल्ट पहनी थी, दैट इज वेरी इनक्रेडिबल। कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें लाइफ में एक मिनट का नहीं पता, मतलब यू वुड थिंक कि पार्किंग ऐसी चीज है, जब आप वैले वाले बंदे को गाड़ी दे रहे हो तब आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, यू अज्यूम, बट वहाँ पे कुछ हो गया। सो एक साइड पे तुम चलाओ पहले, जिसने चलानी। टेस्ला के सामने एक्सीडेंट हुआ था, बट टेस्ला ने सारा कुछ नहीं दिखा। सो कैमरा इस साइड, कार के लेफ्ट साइड सिर्फ इतना ही दिखा रहा है, नॉट द कंप्लीट पिक्चर। राइट साइड, रेयर में कुछ फ़ायदा नहीं, फ्रंट मतलब नहीं देख सकते बेसिकली। एनीवेज, हाँ